waiting for a minute, sir. See, wherever I work very closely with the journalists of that राजीव जी के साथ भी माथुर साहब की मुलाकात हुई, यात्राएं भी की उन्होंने। और इस दृष्टि से हमने सोचा कि इस समय जिस समय पूरा किसान एक जिसको लेकर के पूरे देश में नहीं दुनिया में जिसकी चर्चा होती है, और हमारे आज के खास मेहमान जो मिस्टर पी साईनाथ, जो जाने माने इस मामले में पत्रकार हैं कि अंग्रेजी में लिखते हैं, हिंदी में भी उनके अनुवाद होकर के छपते हैं, और कृषि के क्षेत्र में किसानों की समस्याओं को लेकर के लगातार ऐसा लेखन पूरे भारत में इसको कहना चाहिए कि बेमिसाल है, और दूसरे अखबार उसको फॉलो कर रहे हैं। इसकी कोशिश हमेशा लोग कहते हैं कि ऐसा प्रयास होना चाहिए कि उनको केंद्रित करके, ज़मीन और गांव को केंद्रित करके जो उन्होंने काम किया है। और इसीलिए हमने सोचा कि जो मीडिया की भूमिका है, खास करके इस समय चर्चा में भी रहता है, लेकिन मैं फिर भी ये मानता हूँ कि महानगर में शायद इस समय की चिंता हम ज़्यादा करते हैं। जो ऐसे बड़े अखबार हैं जो ज़्यादा सर्कुलेशन वार में जिसको कहना चाहिए फंसे हुए हैं, वरना आप देखें कि छोटे क्षेत्रीय अखबार या भाषाई अखबार, वो हिंदी के अखबार ही ना हो, मलयालम के हों, गुजराती के हों, तमिल के हों, तेलुगु के हों, उन अखबारों में आज भी गाँव कहीं ना कहीं बसता है, रहता है। और मैं इसीलिए कुछ एक या दो पैराग्राफ आपको जो राजेंद्र माथुर जी ने लिखा उसका जिक्र करना चाहूँगा। और वो आज से लगभग 20 वर्ष पहले लिखा गया, और जब राजीव जी ने पंचायत राज की जो एक तरह से अभियान जो शुरू किया था, उस समय राजेंद्र माथुर जी ने लिखा कि क्या किसी राज्य में ग्राम पंचायतों को और ज़्यादा अधिकार देने के लिए कोई आंदोलन नीचे से शुरू हुआ? क्या किसी शहर ने अपनी भंग नगरपालिका को पुनर्जीवित करने के लिए आंदोलन छेड़ा?
लोकसभा का चुनाव यदि राजीव गांधी 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दें तो प्रतिपक्ष उन्हें तानाशाह और लोकतंत्र का हत्यारा घोषित कर देगा। लेकिन 15 साल तक यदि स्थानीय चुनाव न हो, पंचायतों के चुनाव न हो, तो लोकतंत्र की कोई हत्या नहीं होती, क्योंकि जहां जान ही नहीं है वहां हत्या कैसी। उस समय पंचायत राज को लेकर एक अभियान जो शुरू किया गया था, मणिशंकर अय्यर जी भी खुद प्रधानमंत्री कार्यालय में भी रहे, राजीव जी से जुड़े हुए रहे। और एक बात और माथुर साहब ने लिखी, भारत के सबसे गरीब और सबसे त्रस्त लोग जब आशा की किरणें खोजते हैं तब वो उन्हें गांव के सत्ता परिवेश में नजर नहीं आती। वहां तो निराशा ही निराशा है। आशा उन्हें प्रांतीय सरकारों और मुख्यमंत्रियों से भी प्राय नहीं होती। हालांकि केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य इस कथन के अपवाद रहे हैं। नेहरू जब जीवित थे तब भारत के दरिद्रतम लोगों को नेहरू से आशा थी, और फिर इंदिरा गांधी ने उनकी बस्तियों में आशा की किरण पहुंचाई। अर्थात केंद्र, प्रांत और पंचायत के जाल से ज़्यादा एक चक्रवर्ती शासक की करुणा और उसका न्याय बोध भारत के दरिद्रों को ज़्यादा आश्वस्त करने वाला लगा है। हो सकता है कि पंचायतों को सत्ता सौंपने के बाद भी यह ज़रूरत खत्म न हो। न्याय बिल्कुल नीचे तक ले जाना इतना मुश्किल है कि सनातन भारत की संस्थाएं तो इस मामले में असमर्थ हैं ही, लोकतांत्रिक भारत की राजनीतिक संस्थाएं भी प्रायः कुछ नहीं कर पाती। संतोष की बात यह है कि एक तरफ जब हम किसानों की समस्याओं का जिक्र करते हैं तो कम से कम ऐसे अखबार हैं, हिंदू जैसा अखबार भी, या दूसरे और पत्र पत्रिकाएँ हैं, नई दुनिया है, भास्कर है, आउटलुक है, कई ऐसे पत्र पत्रिका हैं जो गंभीर विषयों को भी आज भी स्थान देते हैं। इसलिए मैं इस बात की, चूंकि प्रारंभ में पी साईनाथ विस्तार से बोलने वाले हैं कि मीडिया का क्या रोल हो सकता है, क्या छोटे अखबार भी उसकी कोई भूमिका निभा सकते हैं, और जो किसान, चाहे वो संतरा पैदा करने वाला किसान हो, चाहे गेहूं पैदा करने वाला किसान हो, चाहे मक्का पैदा करने वाला या गन्ना पैदा करने वाला किसान हो, कपास पैदा करने वाला किसान हो, किस तरह से किसान प्रताड़ित हुए हैं, उनकी समस्याओं को कितना मीडिया ने उभारा है। और ये संकट ऐसा है जो पूरे हमारे समाज के अस्तित्व के लिए है। मणिशंकर अय्यर जी, इस मामले में उनका स्वागत करते हुए यही कहूँगा कि आज के इस आयोजन में भी कहीं न कहीं रुकावट खेल आ जाता है, और आज भी यही हुआ कि कुछ खेल के उसमें मैदान, जैसा कहना चाहिए कि दिल्ली में चारों तरफ से जो किलाबंदी हो गई, उसलिए कार्यक्रम हम लोगों का थोड़ा देर से शुरू हो पा रहा है। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हमारे फिर भी इस सारी जद्दोजहद के बाद भी जैसे गाँव के लोग निकल आते हैं बाहर, ऐसे ही आप देखेंगे कि यहाँ इतने सारे बड़ी संख्या में हमारे मित्र, शुभचिंतक और इस विषय से जुड़े हुए, जिनकी चिंता समाज में आज भी है। आप देखें कि मनोरंजन के कार्यक्रम के लिए लोग नहीं पहुँचते, गंभीर विषयों को भी लोग सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, और यही हमें ताकत देती है। इस तरह के आयोजन से हम समझते हैं कि पत्रकारिता में आगे भी ऐसे अच्छे प्रयास हो सके, और उस मामले में पी साईनाथ के जो अनुभव रहे हैं उसका लाभ हमारे जो नए पत्रकार हैं उनको भी मिलेगा कि आप देश भर में एक एक राज्यों में जाकर के कैसे ज़मीनी सच्चाई को समझते रहे हैं। और एक तरफ सरकार अपने चाहे दावे करे, लेकिन उसके साथ साथ असलियत है, एक लंबी लड़ाई है जो शायद अभी और लड़नी होगी। और उस मामले में मुझे लगता है कि उसके बाद में अध्यक्षीय भाषण के रूप में मणिशंकर अय्यर जी भी जो बातें कहेंगे, वो सत्ता में रहते हुए भी उन्होंने लिखा, वो आज भी कई बार कश्मीर पर आप यदि चाहें तो उनका लिखा हुआ वही उसी रूप में प्रतिबिंबित होता हुआ दिखाई देता है, या अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर जो उनकी सोच रही है। और इसलिए मुझे लगता है कि आज के समय में पूरे देश की जो कृषि और किसान की समस्या है, उसमें मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है, इस आयोजन का प्रयास हमने किया है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। Sainath to deliver the Rajendra Mathur Memorial Lecture 2008. Thank you very much. It's a privilege to be giving this lecture in memory of Rajendra Mathur ji, whom I knew personally. May I say I'm very impressed that so many people made it through the traffic and the security and the torch and the relays. And just as I was leaving Indian Newspaper Society, I was accosted by one of my friends who has not shown up and told me very, very rudely, which is how most of my friends are, very rude. He said, "Oh, so you're going to give that talk there? Well, there are several people who are going to come a long distance to be hurt and offended by what you say." And then he said, "Don't disappoint them." Now, I don't know how many of them made it through the traffic, but I'm not into handing out report cards on the media over here in this talk about agrarian crisis in the media.
And where I'm speaking of the media, just some clarifications in the beginning. Wherever I'm ascribing something to the media, I'm talking about the dominant sections of the media. There have always been exceptions. There will be exceptions. There are exceptions. I'm not, since the eve of the Green Revolution. Millions have left the villages, for other towns, for cities, in search of jobs that are not there. 80 lakh people, 8 million human beings quit farming in the 10 years between the 1991 census and the 2001 census. If you look at number of cultivators, 111 million, 91 census, 103 million, 2001 census. I'm willing to bet anything you like when the 2011 census comes up, this number will be dwarfed. Now, 80 lakh people have left farming. Where did they go? Did we do this story? Have we done anything to say that this is where they've gone? We know where they've gone. Do we? Do we even know how migrations are unfolding in the country today? The only two machinery we have in the country, the NSS and the census, are not equipped to count the kind of migrations that are going on today, especially footloose migration. The kind of shifts of population in this city alone, in the city of Delhi alone, between 1 lakh and 2 lakh, or between 1 lakh and 2 lakh adolescent girls from Jharkhand working as maids from one state. These are Adivasis who do not easily leave their home state. These are people who do not easily leave their home turf. But the estimates are between 1 lakh and 2 lakh Adivasi girls from Jharkhand, adolescent, are working in this city as domestic servants and in other capacities. The food crisis we face today did not happen in the last 6 months. It's been building for more than a decade. It's a carefully constructed crisis. Okay? I mean, it's been constructed, let me say, with considerable effort and pushed through. You've had anyone who thinks that the food crisis is the result of just the shift to ethanol or global factors. My favorite explanation came from Mr. Sharad Pawar, who said that South Indians are eating too many chapatis. At least that's how he's quoted in the DNA. He said, "Pehle wo chawal ka raha tha, abhi wo gehu ka raha hai." So pressure बढ़ गई. So, the problem, I mean, it's true that dietary changes do impact on consumption patterns, but that happens over decades. There is no evidence, media on the one hand and mass reality on the other. That is the first of the principles. The 2004 elections coverage and results give us a spectacular snapshot of that disconnect. A media that was talking to itself, that had no clue of what was unfolding on the ground in the elections, pundits and all, analysis and all. So the first principle that I'm asserting is this: there's a growing disconnect between mass media and mass reality. 2, there is a structural shutout of the poor in the media. The way we have designed our beats, the way we have designed our coverage, it is not an accidental shutout, it's a structural shutout. There are always exceptions. Of course there will be, but I'm not here to debate those. I'm telling you what the broad and the major picture is. I'll come to the structural shutout of the poor in a minute. Third, there's a corporate hijack of media agendas. Fourth, face it, of the so-called 4 estates of democracy, the media are the most exclusionist and the most elitist. You can look at that in caste analysis, class analysis, whichever way you like in the leadership positions of the media. In fact, the media have succeeded in reflecting brilliantly the very narcissistic world of the Indian elite. An elite extremely pleased with themselves. Indians are the biggest earners in the world. Indian CEOs are the fastest earners in the world. Indians are winning golf tournaments. Indian artists are picking up higher prices at Sotheby's. Indian girls are winning more titles in beauty contests. It's an incredibly pleased with itself elite. Tell me that what I am suggesting was not a great story, because what were the girls displaying in the Lakme Fashion Week that year?
cotton garments. The girls were displaying cotton garments 1 hour's flight away from Mumbai. 1 hour's flight away. The men and women who grew that cotton were committing suicide at the rate of 6 a day. 1 every 4 hours. Wasn't that a story? Is there any editor who can tell me that is not a story? It wasn't done. Well, it was done in a couple of publications. The women and men who grew the cotton were committing suicide at the rate of 6 a day. But you had 600 journalists at Lakme Fashion Week, which according to the proud organizers who put it up on their website, produced 360,000 photographs, 800 hours of video footage, and some 500,000 words in print, and so on and so forth. So you have structurally kept people out of coverage, and when you have to cover it, you don't know how. What changed? Actually, I'm very pleased to tell you that a friend from the CMS, Center for Media Studies, has given me one of their latest studies done on the proportion of coverage of different events. This is news priorities in 6 national channels. Agriculture 0. On a subject of overwhelming importance, and it was climaxed by an exercise in self-flagellation that one hasn't seen since the last Muharram. And so, if I have anything to add to this, it is to say that this is the first time I have not, this is the first time that I haven't seen Sainath get to the real bottom of things. For what is happening with regard to the media and the real problems of our country is an accurate reflection of what is happening in the relationship between every segment of society and our existential reality. I know that democracy in India is functioning on all 6 cylinders when the press gallery